بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرتين يتمد فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية ديوة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي يا صاحب حوضي فأذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بوادي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرتين يتمد فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية ديوة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ولد يا صاحب يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية ديبة كأنها راية أخي ونعم رسول الله فقلت نعم ها هو مع والديك تحت الكساء فأقبل الحسن وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بناتي فأذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خطا بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده الجملة إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء له بيتي وخاصتي وحامتي لهم لهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك وإذوانك علي وعليهم واذب عنهم الرجس طهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مبنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وعدل الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحقد على الأرض ليكون معهم سادسا فقال لو نعم كذبت لك فأبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله الذي لا يقولك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مملية ولا أرضا ملهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذر لي يا رسول الله فقال رسول الله عليه السلام يا أمين وإي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت كساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال يا أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا بالكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا فرج الله غمه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا كتب الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد جزاك الله جزاك الله फकीर यार आज एक कलाम सुना क्यों थोड़ा सा पढ़ो लोग जो उस दिन पढ़ा था वो पढ़ो अल्लाह सल्ली अला जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद थैंक यू नारे हैदरी नारे सलावत सल्ली अला मुहम्मद हो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मादर ए अली अकबर मेरे ए अली अकबर मेरे दिल में ये अरमान था देखूं मैं सहरा तेरा हाय किस्मत क्या कहूँ खून में लाशा मिला सहर फूलों की कहाँ खाक का बिस्तर ए अली अकबर मेरे अब नहीं कोई जवां जल गए खैमे यहाँ असगरे नादान भी चल दिए सुए जना बेकफन अब्बास है खाक पर बेसर ए अली अकबर मेरे ए अली अकबर मेरे एक सकीना सी बहन शलह कोड़ों से बदन बांधने को हल्क में शिमर लाया है रसन जुल्म की है इंतहा छिन गए गोहर ए अली अकबर मेरे ए अली अकबर मेरे खो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मादर ए अली अकबर मेरे
वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। नाम ज़ैनब का जो गैरों ने पुकारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। लोग हुसैन इब्ने अली प्यासे ज़िबा होने लगे, लोग हुसैन इब्ने अली प्यासे ज़िबा होने लगे। कितना शर्मिंदा वो दरिया ने किनारा होगा, सज्जाद ने कैसे वो पारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। रोके नेज़े पे बहाने लगे आंसू मौला, रोके नेज़े पे आंसू बहाने लगे मौला। फिर सकीना को किसी शख्स ने मारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा, वक्त सज्जाद ने कैसे वो गुजारा होगा। सवाल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले I would like to request Hassan uncle to please come recite something for us. Salawat. सल्ली अला मुहम्मद व आले नारे हैदरी या अली नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई ऐसा लगे कि बहुत बढ़िया ऐसे नारे लगाना चाहिए। मौला सलामत रखिए भाई। बारह दीगर सलवात पर मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इससे भी एक जाती हुई सलवात का सहारा देंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक सलाम बेटा। बिल्कुल शिमरने पहले सकीना को दिखाया खंजर, शिमरने पहले सकीना को दिखाया खंजर, बाद में गर्दन सरवर पे चलाया खंजर, बाद में गर्दन सरवर पे
से बाप परिवार तो बेटी पे तमाचे बरसे जब भी कातिल का सकीना ने हटाया खंजर जब भी कातिल का सकीना ने हटाया खंजर एक अंगूठी के लिए काट दी अंगूष्ठ हुसैन एक अंगूठी के लिए काट दी अंगूष्ठ हुसैन लाश पर शय पे तुझे रहम न आया खंजर एक शराबी को अज़ियत का कहाँ अंदाज़ा एक शराबी को अज़ियत का कहाँ अंदाज़ा जिस तरह चाह सितमगर ने चलाया खंजर फिर कर मुँह को अली कहते रहे या ज़हरा फिर कर मुँह को अली कहते रहे या ज़हरा इतनी बेदर्दी से जालिम ने चलाया खंजर वाह हुसैना का हुआ शोर तकल्लुम बरपा वाह हुसैना का हुआ शोर तकल्लुम बरपा शिम्र मुख्तार के जब सामने लाया खंजर शिम्र मुख्तार के जब सामने लाया खंजर शिम्र ने पहले सकीना को दिखाया खंजर बाद में गर्दने सरवर पे चलाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
मुहम्मद व आले एक से बात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर दम घुटता है अम्मा मेरा भुइया से चलो घर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर क्या अंधेरा है सुझाई नहीं देता कुछ भी क्या अंधेरा है दिखाई नहीं देता कुछ भी हाथ रखता नहीं अम्मा मेरे सर पर कोई और चंद रोज में मर जाऊंगी मैं घुट घुट कर जिंदा में सकीना ये बुका करती
अपनी गोदी में सुला लो मुझे वारी अम्मा सोने देता नहीं एक पल मुझे ये हिजर पदर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर नील रुखसारों के अरे नील रुखसारों के कानों का लहू है ताजा कुछ मेरे दर्द का अम्मा तुम्हें है अंदाजा गुड़ की शिमर जो देता है तो फटता है जिगर जिंदा में सकीना नींद रुखसारों के नील रुखसारों के कानों का लहू है ताजा कुछ मेरे दर्द का अम्मा तुम्हें है अंदाजा गुड़ की शिमर जो देता है तो फटता है जिगर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रो कर Jazakallah. Now, before I call Maulana Aamir Abbas to address the Majlis, I just want to again say thank you from behalf of the community for coming here to recite Majlis for us. We're grateful to have you again, and inshallah, you continue to come back to the community to bless us with your wisdom. Love salawat. Allahumma salli ala Muhammad. मौलाना की सेहत और सलामती के लिए बड़ा जोर से सलवात भेजिए Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. और हबीब खुदा खत्म अंबिया आवाज़ बुलंद सलवात Allahumma salli ala Muhammad wa ali मोहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना बिल कासिम मुहम्मद Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बकियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना अलैना लल हुदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक अल्लाहुम्मा अर्रिफ़ना नफ़्सक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़ना नफ़्सक लम नअरिफ़ रसूलक अल्लाहुम्मा अर्रिफ़ना रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअर्रिफ़ना रसूलक लम नअरिफ़ हुज्जतक
اللهم عرفنا حجتك فإنك إن لم تعرفنا حجتك ضللنا عن ديننا صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Mu'mineen, please recite a Surah Fatiha for all the marhumin, particularly for marhum on Mu'min. On moment. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. All of our listeners know that what is the basic purpose of this Majlis Imam Hussain alayhi salam, but we need to tell over and over for our young people. Actually, this phenomena has multiple, or you can say that different dimensions. When we are going to have a Majlis, actually this Majlis is providing us our spiritual food. We are getting some spiritual food. We are getting reward from Allah Almighty, divine reward. We are making wasila through this zikr Hussain alayhi salam, and through this zikr we are solving our worldly problems, and inshallah, you know that when we are in this world we are doing some good deeds and we are being rewarded by Allah Almighty, but after our death our chapter is closed, we are not able to do something. So then we need someone who are behind us, who are living in this world, and if they can do something on behalf of us, we will be rewarded there in Alam-e Barzakh. So one of the aspects of these majlis and these kind of majalis is this: our departed souls, our mu'mineen who are no more here. So we are giving them the spiritual reward of zikr Imam Hussain alayhi salam. Inshallah, if we are doing something for the people who have gone from this material world, if we are doing something, we will be able in our future, in Alam-e Barzakh, to get something from the people who will be behind us. If we are doing something, then we will be able to get. So the main purpose of these majalis is this: we are getting knowledge, education and clarification of the ideas about Islam and teaching and preaching of Ahlul Bayt al-Salam. This is so important. Please focus this idea. You know, this is age of computer technology. Everyone has one miracle in his hand that is called Hazrat Ayatullah Google. You can Google and everything, and you will find some, you know, that solution in your hand. But there is a problem. What is the problem? We have one thing we are saying in Arabic, ishtirak al-lafzi. There are so many words that are common between different or among different religions, but actually the concept is different. For example, we are saying that we believe in God. Even in the realm of Islam, we have so many sects. The concept of God, according to the follower of Ahlul Bayt al-Salam, is entirely different from the people who are not following Ahlul Bayt al-Salam. And they are not taking the religion from the source of knowledge that is called Muhammad wa ali Muhammad alayhi salam. So, I can remember once I saw a man, he was an Arabian man, he
He was eating something, a burger, meat burger from Subway. Someone told him, "Oh man, you know that this is not halal?" He said, "From whom you got your religion?" He asked. From the person who was advising him. He said, "What do you mean?" He said, "See, we got our religion from Hazrat Imam Malik. And Hazrat Imam Malik got the religion directly to Hazrat Abu Huraira. And Hazrat Abu Huraira got everything from Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam." So see, if there are some people who are getting Islam from that kind of source, that is other than of Ahlul Bayt alayhimus salam, so you can imagine what kind of Islam they have. What kind of Islam? So there are so many words, ideas. When we are reflecting this idea with the help of the word and term, words and terms are same and common, but the ideas are different. For example, God. For example, angel. For example, shaitan. Shaitan. We are saying shaitan. And that's why I said, if you Google it, what does it mean? Satan or devil. You will find the definition of shaitan and devil. But you know, you are living in West, and when these people, they are saying religion, what does it mean? What kind of religion? When they are saying that religion, Christianity and Judaism, basically. So actually, they are telling you through Google or through GPT, if you are searching something, the definition of Satan, a devil, that is according to the religion other than Islam. So now this is the question, what is the definition of shaitan according to Islam, not only Islam, according to Ahlul Bayt alayhimus salam. Even the people in Islam, other than Ahlul Bayt alayhimus salam, they have very, very different point of view about shaitan also. And shaitan is so important, so important. There are people in this world nowadays who are worshipping shaitan. Church of shaitan we have. Bible of shaitan we have. In sphere of Islam, we have some school of thought. In mysticism, they are saying, "Oh, you know that Shaitan was a genuine worshipper and believer of Allah Almighty. He was so firm on his belief when Allah ordered him, go and prostrate to Adam. He denied, no, I'm accepting only you as a ma'bud." So even there are some people in sphere of Islam, they are respecting shaitan. They are respecting shaitan. And so many things. First caliph, when he came into the power, he delivered a sermon at that time. "Oh people, why you are selecting me as a leader? You know everyone has a shaitan for himself, and I also have one shaitan that is particular for me." And there was a man who said, not that man, other people are saying, whenever second caliph was going somewhere, and if Satan was there, Satan was running away. Because he knew that someone has come who can do my job better than me. So actually, what is the definition of shaitan? And why we need to discuss it? Because we are here to discuss about Islam, about Ahlul Bayt alayhimus salam. Why we are discussing the shaitan? Because in Quran, whenever you are reciting the Quran, what is the first sentence? What is A'udhu billahi minash shaitanir rajeem? Is it verse of Quran? Not verse of Quran, but derived from verse of Quran. What is this verse of Quran? Surah Nahl. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Whenever you are going to recite the Quran, you need to seek the protection from Allah Almighty, to shaitan, the rejected one. So this is the question, what is the definition of shaitan? What does it mean when we are saying word shaitan, and what is difference between shaitan and iblis? And what is the concept of shaitan according to Ahlul Bayt alayhimus salam? And
whether he was an angel or jinn. Because according to Christianity, Shaitan is one of the angels. And some of the people in Muslim world, they are also taking the concept of Shaitan that is presented in Old Testament. In Old Testament, you have story of Shaitan in Quran. When Allah Almighty created Hazrat Adam alayhi salam, what happened? You know that. And Shaitan has interacted with all the prophets. And even Shaitan was there in Karbala also. In Karbala also. We have riwayat from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. When Shimr beheaded Imam Hussain alayhi salam, at that time Shaitan was called all of his, that follower and said, now this is the time I have taken the revenge from the son of Adam. And now we are successful. And what is our duty from now, from the day of Asr Ashura? Just only put some seed of doubts about Ahlul Bayt alayhi salam and about their status in the heart of the people. No, this is our duty. Shaitan was saying at that time. Shaitan was saying at that time. And according to the rawayat of Masumin alayhi salam, Shaitan was there when the people were running away from Battle of Karbala. Sometime, Zuhair ibn Kain was advising the people. Oh people, what are you doing here? You know that? You are going to kill the grandson of Prophet sallallahu alaihi wasallam. That time, sometime people were shivering and they were running away. But sometimes they were seeing someone is coming in the form of Umar ibn Sa'd, in the form of very, very pious people. Where are you going? You are on the right path. You are on the right path. Come back. So, if Shaitan is a mischievous being, why Allah Almighty has created? This is another question, very important question. Because he is a source of astray to a lot of people. So why Allah Almighty has created? Why? What is the purpose of in creation of Shaitan? In Quran, 88 times we have name of Shaitan. 88 times. Shaitan. And 11 times Iblis. 11 times. 9 times when Allah Almighty was narrating the story of Hazrat Adam alayhi salam and Hazrat Hawa. So, Shaitan is a word that is not for Iblis, for everyone who has this mischievous nature. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. It means shayateen are there among jinn and among people, among insan. Iblis, what was the name of that particular mischievous being? His name was Haris. Why he was called Iblis? Because when Allah Almighty ordered him and all the malaika, go and show your respect and prostrate to Adam alayhi salam. At that time, he thought, no, I'm better than Adam. I'm better than Adam. I'm not going to prostrate. Because at that time, he showed his proudness. Takabbur, kibr, al-kibriya ridaw. Kibr is only allowed for Allah Almighty. So because of that kibr, he was called Iblis. Because of this kibr. Otherwise, there are so many other names also. And he has sons and daughters also. Shaitan, he has offspring. Whether he was angel or jinn, jinn or, word jinn is plural form, jinn. What is singular form of this word jinn? Ajinna. Ajinna. When there are a lot of ajinna, that is called like Huriya. Hur.
is not a singular word. That is plural form. Huriya. So, according to Ahlul Bayt alayhimus salam, he was from the group of a jinn. And one of his name is Azazil, because he was respected one among the malaika, among the angels, because of his worship to Allah Almighty. So this is a long story, what happened before creation of Hazrat Adam alayhi salam, who are living on this planet Earth, jinns. And he was one of them. Then he was taken to skies and he worshipped to Allah Almighty. And in one of his prayer, 2 rakat prayer, 1 rakat, he spent 6,000 years in the state of prostration to Allah Almighty. See, Imam Sadiq alayhi salam has a very astonishing narration. Very astonishing. In the book of Biharul Anwar, this narration can open our eyes. When Allah Almighty ordered him, go and prostrate to Adam, he said, oh Allah Almighty, please give me exception. Give me exception. I don't want to prostrate, to do the sajda to Adam alayhi salam. If you give me this exception, I will worship you in a way that no one can have worship like this. What was the reply of Allah Almighty? No. I want to be worshipped in a way that is according to my will, not according to your choice. See what we are doing this thing? No. We are going to do the matam, we are going to do namaz in a way that is according to our own will. No. If you are doing something that is called worship only for the will of Allah Almighty, you have to do this thing according to the will of Allah Almighty. This is the saying of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. According to Christianity and Judaism, Shaitan or devil is one of the angels, fallen angels, because he has committed something that is called sin. According to us, angels are infallible, masoom. They are not able to do anything that is against the will of Allah Almighty. So that's why the progeny of Prophet ﷺ told us Shaitan is not from the clan of Malaika. He is from the clan of Jinn. But he worshipped Allah to Allah Almighty. So that's why there was a time when he was teaching how to worship to angels at that time also. So see how difficult it is. The concept of, and why this concept, we need to discuss this concept. Why? There are a lot of concepts. Why we are not discussing about Allah Almighty? The same thing is coming. Why Allah Almighty has created him? Why? You know, negativity is very, very necessary to highlight the positivity. If you want to know the worth of light, you need to have the concept of darkness. If you don't have some kind of hardship, you will not be able to understand the comfort of easiness. So actually negativity is very, very necessary to know the things. So what is the best source of guidance? Quran. Quran, best source of guidance. And this Surah Nahl, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, whenever you are going to recite the Quran, in first phase you are going to recite the Quran. And actually what is your purpose? To take the guidance from Quran. Not only recital, guidance from the Quran. Here, what kind of problem you can face, there is someone who is Shaitan and who can deviate you in the understanding of Quran also. When you are going to understand the Quran, at that time, there is someone who can
guide you to some wrong path. فَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. So what are the ways to prevent ourselves from the falling in the net of shaitan? According to Masumin alayhi Muslim, first of all, start everything with the name of Allah Almighty. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala Imam Sadiq alayhi salam. Imam Raza alayhi salam. Recite salam. Kullu amrin zibalin lam yubda bi ismillahi fahuwa abtar. If you are going to start anything without Bismillah, without the name of Allah, you will not be able to finish it perfectly. You need to start with the name of Allah Almighty. Then you will be able to accomplish your task. So, in Old Testament, the same story that we have in Quran, when Allah Almighty created Adam and Hawa, and they were wandering in the paradise of Allah Almighty. And Allah told them, don't go near to that particular tree or plant. At that time, Shaitan came and told them something that was against the will of Allah Almighty. In Old Testament, the story is a little bit different. What they are saying, not Shaitan. What they are saying, snake came. Snake. Actually, they use the word snake, but they mean Shaitan. In New Testament, in Injil, the same story, when they mentioned, they wrote the name of Shaitan. Shaitan was there. And he interacted with all the prophets. In the time of Hazrat Nuh alayhi salam, no need to take the time and to tell the story what happened with Hazrat Adam and with Hazrat Hawa alayhi salam and how he interacted with these two holy beings. In the time of Hazrat Nuh alayhi salam, he was the man or person or entity, the shaitan, who told the millat Hazrat Nuh alayhi salam, you need to create some idols. And he created the idol, 5 idols for them. And Allah Almighty mentioned the name of these idols in the time of Hazrat Nuh alayhi salam. In the time of Hazrat Ibrahim alayhi salam, you know that 3 times. First, he came to Hazrat Hajar alayhi salam. When Hazrat Ibrahim alayhi salam taking to Hazrat Ismail alayhi salam for slaughtering. Then he came to Hazrat Ibrahim alayhi salam. Then he came to Hazrat Ismail alayhi salam. And Hazrat Ismail alayhi salam stoned him 3 times. That is called Jamarat. So he interacted with these holy people. He came to Hazrat Yahya alayhi salam. And when he came to Hazrat Yahya alayhi salam, he said, "Oh Prophet, I want to advise you." Hazrat Yahya alayhi salam said, "Curse of Allah Almighty on you. I don't need your advice. But let me know, because you have a lot of exposure. How many people, how many kind of people are there according to you?" You know what was the reply of Shaitan? He said there are 3 kind of people. One kind is like you, the Masumin alayhi salam, prophets, messengers, Masumin alayhi salam. Actually, we know that you are Masum, you are very, very special one. You are Mukhlisin, and we are not investing on you. We know that you will not be fall down in our nets. The second one, there are some people we don't need to invite them because they are following us automatically. And they are like the ball in the hand of a child. We can throw them wherever we want. And again, we are not worried about these people. Yeah, there is third form of people, kind of people. These are ordinary people, and sometimes we are tempting them. We are pursuing them to commit something like sin. We are investing on them, and they are coming with us. They are doing something, we are very happy. They are following us. But suddenly,
they are going back and doing one thing that is called Toba. Toba. Actually, these are the people who are making me tired because I am investing on them, but again they are going back. See, Toba. What we are saying, the door of Toba is not shut. Whenever someone is going back and he is repenting, Allah Almighty is accepting his repentance. Toba. Shaitan is saying to Hazrat Yahya alayhi salam. He came to Hazrat Musa alayhi salam. There was interaction. But there are lot of story. He came to so many times to Hazrat Isa alayhi salam. Once he came to Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Ayyub alayhi salam. Hazrat Ayyub alayhi salam was one of the prophet who was saying every time, Alhamdulillah, Shukran Lillah. Allah Almighty said to Shaitan, you objected at that time when I created Adam alayhi salam. See, this is my Mukhlis Abd. All the time he is paying thanks to me. Shaitan smiled and said, because you have given him a lot of your blessing, because he have wealth, health, offspring, everything. That's why he is saying, oh Allah Almighty, thanks to you. Otherwise, he will not do this. Shukra. Allah Almighty said, okay, you can test him. He came. And first of all, he took one by one all of his offspring, family member. They died. Again, Hazrat Ayyub alayhi salam said, Shukran. Then he took all of belonging of Hazrat Ayyub alayhi salam. What was belonging at that time? What was the wealth, agriculture and livestock? He took all things. But again he was saying Shukran Lillah. Then at the end, he brought some severe diseases and pain to Hazrat Ayyub alayhi salam. Again, he haven't stopped to pay thanks to Allah Almighty. And Shaitan was not able to do something that can hinder Hazrat Ayyub alayhi salam to express his thanks to Allah Almighty. So that's why Shaitan said to Hazrat Yahya alayhi salam, there are some people we are not able to do anything to them. Once Hazrat Sulaiman, the son of David, son of Hazrat Daud alayhi salam, you know that he was the king. He was king. He asked to Allah Almighty, oh Allah Almighty, I want to punish your enemy. Who is the enemy of Allah Almighty? Shaitan. What kind of concept we must have about the Shaitan? What is concept that now we have from Shaitan? When we are seeing very lovely child and he is doing some, sometime innocent movement. What we say? Kitna Shaitan lag raha hai. We are saying kitna, with love and respect. And even we can say in front of parent of this child, बहुत शैतान हो गया, बड़ा शैतान लग रहा है. Who is shaitan? Enemy of Allah. Can we say to same kind? Shimmer lag rahe. Can we say? Shimmer is enemy of Imam Hussain alayhi salam. And shaitan is enemy of Allah Almighty. Shaitan is enemy of all prophet and messenger and Ahlul Bayt alayhi salam. Shaitan was one of them who celebrated the martyrdom of Imam Hussain alayhi salam on the battlefield of Karbala. But what we see, this is the problem. We have a different concept of Shaitan. And this is so soft concept. That's why I said this, Google is sometimes problem. Because these young people, if you ask them, what is the definition of Shaitan? Straight, then directly they will go and they will Google, what is the definition of Shaitan? But this definition is according to Christianity. This definition is according to Judaism, not according to Islam. Even, I told you, even in Islam, the definition of Shaitan according to Ahlul Bayt alayhi salam is entirely different. So, what kind of concept we have from the power of Shaitan?
If someone is doing bad things, oh, Shaitan made him to do this thing. So if Shaitan made him to do this thing, when he will not be accountable on the day of judgment. And if Allah made someone accountable because you have done this thing and Shaitan advised you, Shaitan approached you and you have done this thing, so actually he can say, oh Allah Almighty, you have created the Shaitan. You would not have created this Shaitan because this Shaitan made me to commit this thing. See, what is the concept of power of Shaitan according to Ahlul Bayt alayhimus salam? Shaitan can put some seed of doubt in your mind. Just this. He don't have any power to do something physically. Concept of Ahlul Bayt alayhimus salam. What is the concept of Christianity and Judaism and Sunni Islam? What is the concept? Shaitan has a physical power. He can force you to do something that is not according to will of Allah Almighty, but according to Ahlul Bayt alayhimus salam. No. Shaitan only do something that is called viswas, shakuk, shubahat, doubts in your mind. When you are going to take some decision, he can put some doubts. He can't force you. If he can force you, then you will not be accountable. And if you are not accountable and you are going to be rewarded or be punished on the day of judgment, what will happen? God will not be just. It is a question on the justice of God. So what is the concept of Shaitan and why it is so important? Why it is so important? It's so important. We need to know not only the concept of Shaitan, concept of Malaika, concept of prophets, concept of messengers. Concept of prophet and messenger according to Bible, Old Testament and New Testament is entirely different. And even concept of prophets according to Umayyi Islam, the Islam which was propagated by Bani Umayyah, is entirely different. So that's why we need to take the ideas of religion, different idea like Shaitan, like angel, like the world religion, like the salvation, like the happiness, like the success. All these are ideas and they are abstract ideas. We need to have true connotation and definition of these ideas. And who is the best divine source for this knowledge? Only Ahlul Bayt al-Muslim. Only Ahlul Bayt al-Muslim. Where is the problem? Problem is there because they are common word. In Arabic, in a Persian, we are saying ishtirak lafzi. Ishtirak, commonality. Lafzi, word is common. Word is, God is common. Angels are common. Shaitan is common. There was some religion and now we have, impact of that particular ideas and belief system. No, there was some religion who are thinking there are two gods. One is the God of goodness, that is Allah Almighty, and one is the God of badness. Because Allah Almighty is perfect, khair, and perfect good. He can't create something that is a source of mischievousness like Shaitan. So that's why they believe there are two kinds of God. God of positivity, God of negativity. God of positivity is Allah, God of negativity is Iblis and or Shaitan. In Zoroastrianism, there was a religion, Zoroastrianism. They were thinking, they were called dualistic religion. You have monotheistic religion and dualistic religion. Dualistic religion, they believe in two gods. One was God of positivity, that was Ahura Mazda. And one, the God of negativity, that was Ahriman. And God of positivity, Ahura Mazda, also has some helper who are helping to create and to manage the world. And who are these helpers? Malaika, according to them. And what was the word to reflect the idea of Malaika according to that particular theology of Zoroastrianism? Yazdan. We have this word in Urdu also.
What do you mean when you are saying Yazdan, Allah Almighty? See, this is the problem. Yazdan, according to Zoroastrianism, was a word for the reflecting the meaning or ideas of angel. The same thing is happening in Hinduism. Who is the god of Hinduism? Who is the god? Bhagavan? No. Ishwar. Ishwar. Who is Bhagavan? Helper, like something like angels. Something like angels. So, even now there are people, believer, monotheistic believer, the believer who are saying that we believe in Abrahamic religion, we believe in revealed Semitic religion, Judaism, Christianity and Islam. They are thinking they are two entities and they are horizontal. One is God, the second is Shaitan. The second is Shaitan. So that's why we need to know from Ahlul Bayt al-Muslim whether Shaitan is able to do something. Ahlul Bayt al-Muslim told no, physically not. Physically not. You can't say that I am not responsible, I am not accountable because he made me to do this thing. He made me to do this thing. We can't say. He can do only create and cultivate seeds of doubt in your mind. Only this thing. Only this thing. So if we have firm belief at that time, how many things can prevent us to be the victim of shaitan? One of them is Bismillahir Rahmanir Rahim. Second, Zikr Ilahi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar. Third, making the wasila to Ahlul Bayt al-Muslim. Making the wasila to Ahlul Bayt al-Muslim. Hazrat Sulaiman, he asked, "O Allah Almighty, you gave me the power. Now I am raining on jinns also. Even the air in my commands. Give me an opportunity because I want to punish your enemy, Shaitan." Allah Almighty said, don't do this thing. Because in, you can say that universal system, Shaitan, the presence and existence of Shaitan is also needed. See why God have created him. He said, no, because you gave me the power, please give me this chance to punish him. Then Allah Almighty gave him this chance. So he ordered, they brought the Shaitan, and Shaitan was enchained. You know, Hazrat Salman was king, not king. When we are saying Badshah, there is a Shah, king. Badshah, a king who is ruling on air also. So, but Hazrat Sulaiman, sorry, I'm saying Salman Farsi and Sulaiman, the prophet. Sulaiman, you know that how he was earning for his livelihood? He was making some bags, water bags, mashkida, and selling it in to the bazaar, in market. So he prepared some bag and gave to some of his servants, go and sell it out and bring me some money for me so that I can buy some food stuff to eat. They went and they came back. No one is in the bazaar, no one is in the market. Where are they? We don't know where they have gone. One day, second day, third day. Then Sulaiman asked to Allah Almighty, what is happening? Allah Almighty revealed to Sulaiman, because you have imprisoned the Shaitan. Shaitan is someone who is putting some greed in the heart of the people, and then they are coming to do something to, you know that when people are in the bazaar, what they are doing? What they are doing? They want to earn something by different means. When Shaitan was in imprisonment, all the people, they went to the worship place. They were worshipping to Allah Almighty at that time. So Allah Almighty told to Hazrat Sulaiman, presence of Shaitan, existence of Shaitan, creation of Shaitan is very, very necessary to show the people
about the worth, meaningfulness, significance of the positivity and all the positive things. All the positive things. So that's why Allah Almighty has created the shaitan, because shaitan is a source of testing to the people also. Shaitan is a source for the people who can make some advancement to their perfection. They need the presence of shaitan. We need the presence of shaitan. So if there is no shaitan, all will be like the malaika. And then how we can differentiate from bads to goods one. So shaitan was there in Karbala also. So he was telling to the people, there were different means of shaitan. For example, when Shimr came to the tent of Imam Hussain alayhi salam, and he said, where are the sons of my sister, Hazrat Bani? Because I took some guarantee for them. Actually, this was also one of the tool of shaitan at that time. Tool of shaitan. There were two kind of people in Karbala. One, the real follower of Imam Hussain alayhi salam. The second, the people were thinking that we are following their own Imam Yazid, but actually they were follower of shaitan. They were follower of shaitan. And a few people were there who ignored all kind of temptation from the shaitan, like Zuhair ibn Kain. Imam Hussain alayhi salam was reciting the verse of Quran which was saying that only sincere believer will be successful. Someone from Yazid camp, he said, oh Hussain, the sincere believer not in your tent, we are the sincere believer. Because shaitan was there who were telling them. You know, these days are days of Imam Sajjad alayhi salam, and Imam alayhi salam knew that he was able to see the shaitan also. Shaitan was also present in the Darbar-e-Yazid also. When Imam Zainul Abideeen alayhi salam came back, all the time he was crying and he was weeping. All the time. There are some narration when he was crying, blood was coming from his eyes. Someone asked from one of the Marja, Ayatollah Mohsin Hakim, is it possible? Not possible. That particular Marja, Ayatollah Mohsin Hakim, took one white handkerchief and put on his eyes, and he started crying on Imam Hussain alayhi salam, and then showed the people, see, there is a blood. So if I can cry with the blood tear, why not Imam Zainul Abideeen alayhi salam? Why not? So when Imam alayhi salam came back from Sham, after 20 years, Almighty blessed Imam alayhi salam with a child, and his name was Zaid. Zaid saw all the time his father is crying. All the time his father is remembering Imam Hussain alayhi salam and crying. When he asked from his elder brother, Imam Muhammad Baqir alayhi salam, oh my brother, let me know what happened. Why all the time my father is crying? Imam Muhammad Baqir alayhi salam told the Zaid, and Zaid was only 4 or 5 years old at that time. Zaid, you are not there. We have an aunt, and her name was Sakina. Whenever Shimr wanted to torture my grandfather, whenever he wanted to torture our uncle Hazrat Abul Fadl Abbas, whenever he wanted to torture and give the pain to our father, he was beating to our 4-year-old aunt. And that, can you remember? We were on the way of Syria. In one desert, when Yazid army rested there, they were resting in shadow, and they made us sit in hot sand. And then Yazid army, they were giving the water to their soldier and to their animals. Our aunt, Hazrat Sakina, asked from Hazrat Zainab, oh my aunt, can I go and ask
some drop of water from this cruel man? She gave permission to Hazrat Sakina. Sakina came. Shimar was watching that I am going to one soldier, to another soldier, and I am giving them the water. Sakina was following him. And after the giving the water to the soldier, he started to watering the animals. Again, Sakina was following him. When he finished his task, he saw and he asked Sakina, "Are you thirsty?" She said, "Yes." "Would you like to some water?" "Yes." He opened the water bag and threw all the water on sand. Sakina Salamullah alaiha fell down on the sand. She was crying and took some wet sand and said to Shimr, "Shimr, I was not asking water for myself. You know, my brother Zainul Abideeen, Sayyidul Sajideen is in chain, and these chains are burning chain during to this sun shining. I want some drops of the water so that I can make these chains a little bit cold for my brother." हाँ अज़ादारो, पूछा गया इमाम से, मौला हर वक्त रोते हैं, मौला 40 साल हो गए रोते हुए, कब तक रोएंगे? मौला क्या फरमाते हैं, ए पूछने वाले, तूने इंसाफ नहीं किया। 12 बेटे थे याकूब के, नबी थे, एक बेटा आंखों से उजल हुआ। नबी अल्लाह को पता था कि मेरा बेटा जिंदा है, इतना गिरिया किया कि आंखों का नूर जाता रहा। अरे मेरी आंखों के सामने तो मेरा पूरा कुंबा ज़िबा कर दिया गया। इमाम बाजार में निकलते थे, लोग अपने उन जानवरों को जिन्हें ज़िबा कर चुके होते थे, कसाब उन पे कपड़ा डाल देते थे। अगर कोई कपड़ा डालने से कोई भूल जाता तो इमाम उसके करीब जाके कहते थे, ऐ शख्स, तूने इसे ज़िबा किया है, क्या ज़िबा करने से पहले इसे पानी पिलाया है? क्या तूने अपने खंजर को तेज किया था? जब वो कहता, मौला मैं मुसलमान हूँ, मैंने पहले पानी भी पिलाया था, मैंने अपनी छुरी को तेज भी किया था। बस एक दफ़ा करबला की तरफ रुख करके कहते हैं, बाबा वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान हैं। बाबा मुझे याद है कि आप अली असगर के लिए कैसे पानी का सवाल कर रहे थे। किसी ने सवाल किया, मौला कब तक रोएंगे? मौला ने कहा, तुझे क्या पता शाम में हमारे साथ क्या क्या पेश आया? किसी ने कहा, मौला बताइए शाम में क्या बात थी? अब मौला बताते हैं, सुनो, जब हम शाम में दाखिल हुए, हमें दरबार के बाहर रोक दिया गया और कहा गया कि अभी तक दरबार को सजाया नहीं जा सका। अली की बेटियां, नबी की निवासियां, फातिमा की बेटियां 15 अज़ाने बार खड़े होके सड़क पे सुनती रही, इसलिए कि अभी तक दरबार को सजाया नहीं गया। और फिर जब हमें यजीद के सामने पेश किया गया तो एक रस्सी थी और 9 गले थे। उसी रस्सी के साथ मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब का गला बंधा हुआ था और एक सिरे पे मेरी छोटी 4 साला बहन सकीना का गला बंधा हुआ था। मेरी फूफियों को और माओं को रकू की हालत में खड़ा होना पड़ता था। अगर वो सीधी होके खड़ा होती तो सकीना का सांस घुटने लगता था। और फिर मौला कहते हैं, ये हमें हर रोज़ किसी ना किसी बाज़ार में ले जाते थे। एक दफ़ा हमें यहूदियों के बाज़ार में ले गए और जाके कहा, ऐ यहूदियों, ऐ शाम के यहूदियों, आ जाओ बदला ले लो खैबर का, इसलिए कि मोहम्मद और अली की औलाद को हम असीर बना के ले आए हैं। बोला इमाम सज्जाद कहते थे कि उन यहूदी औरतों ने जिसके हाथ में जो कुछ था उसने हम पे फेंका। इमाम रो के कहते हैं, एक यहूदी औरत ने छत से अंगारे मुझ पे फेंके, मेरे हाथ फंसे पुष्ट बंधे हुए थे, मैं चलाता रहा, मेरा सर जल गया, लेकिन किसी मुसलमान को रहम नहीं आया। फिर मौला कहते हैं, एक दिन ऐसा हुआ कि हमें यजीद के दरबार में पेश किया गया। एक दरबारी उठा, उसने मेरी बहन सकीना की तरफ इशारा करके कहा, यजीद इस बच्ची को मेरी कनीजी में दे दे। बस कनीजी का नाम सुनना था, सकीना तड़प जाती है, फूफी अम्मा के करीब आके कहती है, फूफी अम्मा क्या अब हमारी किस्मत में ये भी लिखा है?
और शाम में फिर क्या क्या हम पे नहीं हुआ। हमें एक ऐसे जिंदान में फेंक दिया गया जिस पे छत नहीं थी। दिन को इतनी गर्मी होती थी, सूरज की तमाज़त होती थी, रात को इतनी सर्दी होती थी, और हमारे बच्चों को पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता था। मुझे याद है कि मेरी बहन कितना बिलक बिलक के रोती थी। फिर एक रात आई, सकीना ख्वाब से हड़बड़ा के उठ बैठी, बाबा बाबा कह के रोना शुरू किया। इतना रोई कि आवाज यजीद के कानों तक पहुंची। उसके नींद में खलल पैदा हुआ। पूछा तो बताया गया कि हुसैन की बच्ची रो रही है। उसने कहा अच्छा, हुसैन का सर हुसैन की बच्ची के लिए भेज दो। बस जब सकीना ने अपने बाबा का सर देखा तो उस सर पे मुंह रख दिया। बाबा बाबा, ये किस जालिम ने आपकी रगें काट दी। बस बाबा बाबा करती हुई बच्ची खामोश हो गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस अज़ादारों, कुछ ऐसे गस्साल हैं जिन्होंने ऐसी मैयतों को गुस्ल दिया है कि वो गुस्ल देते हुए गिरिया करते रहे हैं। पहला गुस्ल मौलाए कायनात ने जनाब सैयदा को दिया था। गुस्ल देते हुए अली जैसे बहादुर ने एक चीख मारी। फिजा ने पूछा मौला, इस गिरिये का सबब क्या है? अली कहते हैं नबीजादी ने मुझसे छुपाया कि उसकी पसलियां तोड़ दी गई है। दूसरा गस्साल ज़ैनुल आबिदीन था। अपनी बहन को गुस्ल देने के वक्त जब ज़ैनब कुबरा ने पूछा बेटा, सकीना का कुर्ता उसके जिस्म से चिपक के रह गया है, मेरा बेटा मुझे बता मैं ये कुर्ता कैसे जुदा करूं? सैयद सज्जाद कहते हैं भूपी अम्मा, सकीना को मजीद तकलीफ होगी, उसका कुर्ता जुदा ना करें, इसी तरह गुस्ल दे दे। हाँ अज़ादारों, एक गस्साल इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम हैं, अपने बाबा को गुस्ल दे रहे हैं, रोते जा रहे हैं। किसी ने पूछा, कहा कि वो कादियानों के निशान आज तक कायम है। अरे जहां पे बेड़ियां पहनाई गई थी वो बेड़ियां गोश्त को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच गई थी। आखिरी वक्त आ गया, इमाम को जहर मिल गई है। इमाम अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम को पास बुला के कहते हैं, बाकिर मुझे ये बता करबला में तू कितने साल का था? बाबा मैं 4 साल का था। अच्छा मुझे बताओ तुझे क्या याद है? बाबा मुझे याद है कि किस तरह दादा हुसैन चचा अली अकबर का जनाजा लेके आए थे। बाबा मुझे याद है कि दादा हुसैन किस तरह हमारे दादा हजरत अब्बास का जनाजा लेके आए थे। अरे बाबा मुझे अच्छे तरीके से याद है कि किस तरह मौला हुसैन अपने शिशमाए के लिए पानी का सवाल कर रहे थे। अच्छा बाकिर और तुम्हें क्या याद है? इमाम पूछते जा रहे हैं और इमाम मोहम्मद बाकिर बताते जा रहे हैं। बस एक दफ़ा जब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा मुझे याद है ख़याम को आग लग गई, कुछ लईन खैमों में घुस आए, उन्होंने हमारी फूफी अम्मा की चादर नेज़े की नोक से उतार ली। बस इतना कहा, एक आवाज बुलंद हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फूफी की चादर का सुनना था, सज्जाद की रूह कफ़-ए उनसरी से परवाज कर गई। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन। याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। कूफे का और शाम का मंजर, कूफे का और शाम का मंजर। कब्र पे शबीर की करते थे आबद बुका, कब्र पे शबीर की करते थे आबद बुका। हो गई क्या जफा सुनिए सहे करबला, हो गई क्या जफा सुनिए सहे करबला।
बंधे छोटे बड़ों के गले, एक रस्म में बंधे छोटे बड़ों के गले, बरसर दरबार सब इस तरह लाए गए, बरसर दरबार सब इस तरह लाए गए, बरसर दरबार सब इस तरह लाए गए, बरसर दरबार सब इस तरह लाए गए। होठ से बरसाते थे पत्थर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। तूफे का और शाम का मंजर, तूफे का और शाम का मंजर, शौक से हरगिज़ न था बाबा मेरा सर झुका, शौक से हरगिज़ न था बाबा मेरा सर झुका, हथकड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न था, कड़ी और बेड़ी का कोई मुझे गम न था, देखा नहीं जाता था मंजर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। तूफे का और शाम का मंजर, तूफे का और शाम का मंजर, पाली सकीना का गम फिर ये नहीं भूलता, वाली सकीना का गम दिल ये नहीं भूलता, सबके थे साने बंधे उसका बंधा था गला, के तिशाने बंधे उसका बंधा था गला, दर्द से वो रहती थी मुज़्तर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। तूफे का और शाम का मंजर, तूफे का और शाम का मंजर, जब किया सज्जाद से आके किसी ने सवाल, किया सज्जाद से आके किसी ने सवाल, उसने कहा पर इमाम आपको ज्यादा मलाम, कहाँ पर इमाम आपको ज्यादा मलाल, कहते थे शाम मुकर्रर, याद जब आ जाता है बाबा, दिल मेरा फट जाता है बाबा। तूफे का और शाम का मंजर, तूफे का और शाम का मंजर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, तू सहनसा है दर्द है, तू सहनसा है दर्द है, बतला रही है शाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, चला बेकसों का कारवां, बीमार लोगों सारवां है, संग सरे हुरिया, शाहिला फता की बेटियां, करबो बला के दस्त में, करबो बला के दस्त में, कर पाहे को हराम, रोने के लिए काफी है सजाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है
चेहरा जर्द है, करबल की ज़मीं गर्द है, ज़ैनब का दिल में दर्द है, रोता है सर झुका के, रोता है सर झुका के, करता नहीं कलाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम। जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, 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 रोज़ाए शबीर पर दूंगा दुआ ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। है जहाँ गंजे शहीदा, है जहाँ नहरे फुरात, है जहाँ गंजे शहीदा, है जहाँ नहरे फुरात, सैयद मेरा प्यार चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगा मैं, जिस जगह जागी थी किस्मत हुर की वो देखूंगा मैं, आसियों पर कैसे होती है अदाले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे। इस कदर नादार हूँ ज़ादे सफर कुछ भी नहीं, इस कदर नादार हो ज़ादे सफर कुछ भी नहीं, दोष पर अपने बिता कर हवाले चल मुझे, जाने वाले करबला के करबला ले चल मुझे, जाने वाले करबला के
बातें अभी तो करती थी आंसू बहा बहा, साकित है नफ्स हाय गजब सर्द दस्तों पा, मुँह देखते ही जिस्त का नक्शा बदल गया, किस वक्त सांस रुक गई, कब दम निकल गया, किस वक्त सांस रुक गई, कब दम निकल गया। माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। अब न खोलेगी आंखें यतीमा कभी, जानती है सकीना को नींद आ गई, फिर भी तकदीर को आजमाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। बेयकीनी की है कैफियत किस कदर, जानती है कि बाकी है जान से मगर, जिंदगी अपना दामन छुड़ाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। पानी लाए कहाँ से वो इसके लिए, तश्न लब है सकीना खबर है उसे, प्यासे आंखों पे आंसू गिराती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। रो रही थी ज़मीं, रो रहा था फलक, वक्त तदफीन से वक्त तलकीन तक, मिन्नतें करके उसको जगाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। थी तकल्लुम वो गुर्बत की ऐसी घड़ी, जब अंधेरे में बच्ची की मैयत उठी, कब्र नहीं सैनब बनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही, मौत बच्ची को लोरी सुनाती रही, माँ सकीना का शाना हिलाती रही। या हुसैन, 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 या
عليك بدار ها؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم وصفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والوتر الموجود. أشهد أنك تقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وآتاك الله ورسوله وأتاك اليقين. فلعن الله من قتلتك ولعن الله من ظلمتك ولعن الله من سمن بذلك فرجت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الإسلام بشامكته وارحمنا متعالى لم تنجسك الجاهلية بأنجاشها ولم تبلس من مدن ثيابها وأشهد أنك من داعم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك إمام بر التقي الرزي الزكي الحادي والمهدي وأشهد أنك إمام من ملك كلمة التقوى وعلى من قضى الرزق والوجود على أهل الدنيا وأشهد أن لا ملائكة وأنبياء ورسل وأني بكم مؤمن وبياكم موقنون بإشراقين أخواتي وأمالي وقلبي لقلبكم سلم وأمر الله منكم وانصرات عليكم وعلى آبائكم وعلى أجدادكم وعلى أجدامكم وعلى أشاهدكم وعلى أقاربكم وعلى زهركم وعلى باطنكم. زهر برد وزاد جناب علي فرجي وسنجيس فربتنا الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك يا شهيد وابن شهيد. السلام عليك يا المظلوم المظلوم. لعن الله من قتلتك ولعن الله من ظلمتك ولعن الله من سمعتك وفرجت به. السلام عليكم يا أولياء وأحباب. السلام عليكم يا سلاء وإداه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيد النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن يزكي الناصر. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. يا أبي أنتم أمي طبتم وتعبد الرجل التي أدخل فزت فوزا عظيما. يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زرفة زاد رجل أبو الفضل عباس الله. السلام عليكم يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا ابن سالم الله ورسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصرت صبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين وآخر بذلك الجحيم. السلام عليكم يا أبا عبد الله. السلام عليكم يا ابن رسول الله. السلام عليكم يا أمير المؤمنين. السلام عليكم يا ابن سيد المرسلين. السلام عليكم يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.